You can do it to me. First of all, why is this so good? How our studies go. By the way, we were doing alternating current equations on that day. So, पहले थोड़ा वही continue रखते हैं. ऐसे तो मेरे को पढ़ना मुश्किल होगा. सब भी बोलते हैं. So I just do one thing. So many things now. Today I was just, I've just settled my table, and this is what it looks like. This table doesn't have much width to study. And my internet connection here is actually very weak. Okay, to restart it. So guys, that day we did alternating current, and I have also concluded up on things like um, wait a second, I'm also sitting on this table for the first time and then trying to understand what's going on. Okay, how do I position this? Is this fine? Okay. Huh. This is important chapters of physics. Hmm. So, Abhishek, I think he hasn't joined right now. Once he come, we'll start with electrostatics. And I have seen there are many chapters um, where it was actually so many one questions were coming like ray optics, electrostatics, all current electricity, all these chapters like had two questions, three questions, two maximum. But apart from that, all other chapter had one question. So I would say that it is important to cover those chapters also. And very simple and a basic questions are being have been asked from those chapters. For maths, I have noticed a pattern of so many questions from 3D geometry, straight lines, sets and relation functions. This is an analysis I'm giving you from the previous year paper, which was held in 2025. So for that, I noticed that. So once we will start with the maths ka series, which even I have to study. So I'll start with the solely relation function sets and 3D geometry I'll begin with. Okay. So these three topics I think are very important apart from calculus. Okay. Currently, we were doing alternating current, which I will continue and I'll wrap it up. And as I told you guys, I will give you guys short notes tomorrow. Definitely in daytime, when I'm sitting idle, I'll do it. Okay. So let's start. Um, I don't know how is the live class
तुम लोगों को कैसा लग रहा होगा आज, but this is what it is now. I don't even remember on which question did I left. N50, okay. This question number 8 only I left. So an AC generator consists of 50 turns, 2.5 area, angular speed 60, and P is given. We need to find flux. Okay. Hmm. So yes, in this question, just don't straight up go and start calculating. You need to understand the concept that when the current is zero. So when the current is zero, the coil is in vertical position. Okay. So flex through the coil will be maximum. Okay. You need to understand this. Who is this? Someone said hi. Tina Luja said hi. Hi, Tina. How are you? We did study about transformer, right? For AC generator. When current is zero, this is why you attempt questions because some knowledge you do get from the this thing only. I'm so sorry for the bad internet. I'll get my Wi-Fi fixed. Then the coil is in vertical position. And when the coil is in vertical position, then the flux is maximum. Okay. And when current is maximum, the coil is in horizontal position. So flux is minimum. We'll see. I forgot what is coil exactly. What is flux equation? Hmm. Hanging Queen, hi. Keep grinding. We will meet at ATC training. Hi. I hope you have subscribed to the channel and you are preparing as well. Can I know your name? Okay, what is magnetic flux? So it is a measurement of how much that I know how much magnetic field is passing is magnetic flux. Okay. How much magnetic field is passing through a surface? Your name is Prudhvi Raj. Okay, so why is your YouTube name as Hanging Queen? Prudhvi Raj. Am I pronouncing it correct or wrong? So flux is phi is equal to NBA cos phi. Sorry.
not M. It will be fake also. Theta, sorry, not phi. Angle between the magnetic field and in AC generator, the coil rotates continuously in a magnetic field. As coil rotates, theta becomes a. Oh, nice. So phi is equal to V cos omega. I hope you are studying right now instead of playing chess. So for n number of turns, phi is equal to n. Oh, this is nba cos omega t, not mba cos omega t. Okay. So how current depends on coil position? So we know that EMF is equal to negative of d phi by dt. So E is equal to NBA sin omega t. Also omega आएगा. So because current is maximum and the rate of change of flux is maximum. And current is zero when flux is maximum. Current is maximum when this is maximum. Current is zero when this is maximum or minimum. I think it depends upon sign terms. Or plane perpendicular. In passes. Yes, I'm preparing and not playing chess, but completed only mechanics and thermodynamics and fluid mechanics only. That is great that you initiated with 11th grade. Even I will come back to those topics, but it's been so long that I haven't seen 12th grade. So I thought of covering them first, then going to these topics. Actually, I also thought of starting with thermodynamics from next week. Okay, so hmm, take current and flux as and weight stuff. Oil and magnetic. So window facing the ray means wave passes, hence flux become maximum. And
induced current become zero. This is the first case. Second is window parallel to rain. No rain passes. Hence, there is no flux. So, current is maximum. Please remember my name and write somewhere we'll meet at ATC training soon. But you have a lot of confidence that I'll clear the exam and definitely you will clear the exam. You want me to write your name? So, okay, I'll write it. I don't have an issue. So, sorry. I remember you as my YouTube subscriber. So, this is my ATC diary. I like that confidence that you have confidence that I will clear the exam. Okay, I'll write it here. Why aren't those there? Hmm. Thank you for showing confidence. Um, your name, I wrote. I hope you're happy. I've written in it. And this is in my diary as well. This is my ATC card. So now, because of this, now we know that this question will be this. Next is AC voltage applied to a resistor. Welcome. Actually, I'm sitting for the very first time in this setup, and I'm not handy to the setup, so things are here and there. I'm not able to get what is going on. So it's taking a little time. But I thought of giving up this week as a last time for settlement in this house. What is the RMS value of current if its instantaneous value is 8 sine 314? So they have given I, we know I is equal to I naught sine omega t. They're asking about IRMS, and we know it is I naught by root 2, which is 8 by root 2, which can be also written as 2 into root 2 into root 2 into 2 upon root 2. This and this gets cancelled. So 4 root 2 ampere should be the answer. What will be the RMS value of the voltage? Okay. If the sinusoidal value voltage given by E is equal to 100 sine 314 be applied across a resistor of 15 ohms. Okay, R is given 15 ohms. Let me see how do we do this. So I get I naught, that is 100, and if I want this, it should be 100 by root 2. Let me see what have they got. Root 2.
That is correct. Only root 2 is 1.14. It's 1.141. So if I do 1 on root 2, it is 0.707. So 0.707 thousand into 100 gives you 7.07. Yes, I have my red pen. Sorry, just did not read it. Determine the RMS value of the current in the circuit if a 50 ohm resistor is connected to this. Connected across an AC source of 200 volt, we need to find IRMS. So, what do? We get the value of V naught. We can find IRMS is ERMS upon R. So IRMS is 200 upon 50, which is 4. Okay, if the source is connected, then RMS will we talk about inputs. Calculate the RMS voltage if the peak value of AC is 300. This is the peak value, and whenever they talk about peak value, it means it should be 300 times 0.707. This is 1000. So 7073 2121. So 4.1212.1 voltage. Find out the net power consumed. They are asking about power consumed for a full cycle. Okay. If R is 150 ohm, V RMS 350 volt, and frequency is 100 hertz. Okay, they have asked us about power consumption. So first of all, we know IRMS is VRMS upon R, which is 350 by 150, which is 7 upon 3. So which is 2.3 amperes. So power consumption is equal to VRMS into IRMS, which is 2.3 into 350. Eight zero five 805.
when a sinusoidal voltage E is equal to 200 sine 314 T is applied to a resistor 10 ohm, the power dissipated is 250 watts. Okay, so we need to find the power in this case first of all. I know this is E naught, so I will find ERMS, which is 200 by root 2 in this case. Okay, how is this 50 by root 2 first of all? Hmm. That I know. This should be root 2 into root 2 into 100, and this should be root 2 this in this bit. And so 1.41 into 100. So it is 1 for 1.4. Okay. Average power is equal to power is equal to V square RMS upon R, which is 141.4 into 141.4 upon 10. Seriously, this can also be written as root 2 into root 2. How do we want to multiply it by 100? 1 to multiply by, right? Is it by 10? So this becomes 2, 1, 2, 3, 4, 10, and this gets cancelled. So this becomes 2000 watt. So this should be false. One answer two, alright. Yes. Guess it. How have they taken this as 50? That is why I did not give answer to. No, it doesn't know answers back here. So explain me how it is possible. Yes, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है क्योंकि how have they taken this E node as 50? On which principle they applied this as 50? That is wrong. Which value of current do you measure with AC ammeter? I think RMS. Yes, we measure most of the time whatever we are using is RMS only. Calculate the value of the peak current if the RMS is 50. So 50 into. Wait a second. I'm so sorry. We need to find I naught, which will be I RMS into root 2, which will be 50 into 7.70. 7.70, right?
What is this? It should be around 35.35. Where is this? I mean, sometimes I feel like I should calculate 50 into root 2. Root 2 is 1.414. 1414. Take this 5027. It is 70.7. So we are here at alternating current and we are at phasors. One, two, three, four, six. So many bits. We'll see. Take out the SI unit of magnetic flux. So magnetic flux is BA. So Weber, yes, Weber. The magnetic flux is this. Identify the correct dimensions of magnetic flux. Yes, I don't know. So this is, we know flux is P into A, and we know B is, these are dimensions. What is A? Oh, that's current. But I'm just trying to remember what A is. I'm very weak in this. We need to do this. Definitely not this and not this. Can be Tesla, Maxwell, is this the easiest one. Okay. By the way, what was the dimension? That is magnetic flux 90 degree होगा तो फ्लक्स ज्यादा होता है
can also be drawn from either side. If the normal drawn to the plane points out in the direction of the soul. I am not able to understand this flux or nothing. The total number of magnetic lines of force crossing the surface placed in a magnetic field normally is called magnetic induction law flux. Calculate the magnetic flux when the magnetic field is perpendicular to the surface area. Magnetic flux, when it is perpendicular to the surface area, it should be maximum. Near cos. Which type of physical quantity is magnetic flux? Vector, scalar. Calculate the magnetic flux produced when the magnetic field is parallel, zero. When the magnetic field is said to be negative. The above positive, it was zero. So negative, it will be when cos is negative because flux is definitely cos. And cos is negative when it is 180 degree, I guess so. Which among is the which among the following is true about Faraday's law of induction? An EMF is induced in a current conductor when it cuts the magnetic field. No, पैरेलल के केस में तो नहीं है. परपेंडिकुलर होगा तो जा सकता है. Cut is the correct word according to the. What is proportional to the magnitude of induced EMF? This rate of change of magnetic flux. Faraday's laws are the result of conservation of which part? Magnetic field. Energy. Oh. The induced EMF persists only as long as there is change in truth. The magnetic flux in a closed circuit of resistance 20. This. Okay. That's a question we can expect. Phi is 4t cubed plus 2t square minus 15t plus 3 d phi by dt. 12t square plus 4t minus 15 at 1 decimal. So 12 plus 4 minus 15. 12 plus 4 is definitely 16 and it should be 1 for it.
चारों तरफ है भीड़, चर्चे. And yes, this is correct. पढ़ाई के नाम पे तो हमको ऐसा नींद आने लग जाता है ना. Why are view answers already displayed? Okay, whatever. A closed loop moves normal to the constant electric field between the plates of a charged capacitor. What is the amount of current produced when it is moving inside the region? So जो हमारा कैपेसिटर होता है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, स्टोर करता है. तो एक क्लोज लूप अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली लगा दूं तो ये मेरे है. और नॉर्मली लगाने का मतलब है कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसा लगाते हैं. आई थिंक not sure about this. So no current is produced when it is moving inside the current cannot be used by charging it. I did not understand this concept, so we will go. Which law does is used in finding the current into AC generator? It is ACM. Wait, let me see. Use of that. Lenz's law. Yes. Hi, Abhishek. Okay. The correct answer is zero. It is moving in a constant electric field between plates. To induce current and force both being made change in electric field. There is only electric field present. The electric field is constant. So there is no current. कैसे और डिनर कर लिया? यार मैं इसलिए नहीं कुछ बोली क्योंकि यार मेरे को खुद को श्योर नहीं था. आज एक्चुअली मेरे 2-3 प्लान्स भी अभी आधा फर्नीचर रखा है एंड ये कल फिर से आएगा. एंड मेरी दोस्त बोली थी कि वो आज आएगी. तो अब जब वो आएगी तो मैं पढ़ने बैठ जाऊँ अच्छा नहीं लगता है. तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस टाइम पे लाइव शुरू करूँ. तो दोपहर के समय वो बोल रही थी आएगी, दोपहर को बोल रही शाम को आएगी एंड शाम को बोल रही है कल आएगी. तो इसीलिए अभी फिर हमने सोचा कि हमारा यूजुअल टाइम तो 9 बजे का है तो 9 बजे लाइव आ ही जाते हैं. तो इसलिए मैं 9 बजे आई. और मुझे लगता नहीं कि मुझे घंटा हुआ पड़ते हुए, मुझे लगता है आधा घंटा ही हुआ है. सो या व्हाट वाज आई स्टडीइंग? क्लोज्ड लूप in charged parallel plate capacitors do not produce electricity because we need moving or changing magnetic fields or current. हाँ यार मैंने भी डिनर कर लिया है. चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में यस कांस्टेंट नहीं. क्या पढ़ लिया तुमने अभी तक? लेंजेस लॉस एंड डायरेक्शन फाइंड करते हैं व्हिच इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए होता है. The current in a wire passing normally through the center of a conducting loop is increasing at a constant rate. Current, okay. What is the net current induced in the loop? लूप में क्या जा रहा है? लूप में कैसे जाएगा? That's the question. Induced EMF. By direction. ये कैसा स्टेटमेंट?
हर एक का आंसर आ सकता है इस क्वेश्चन में लेंसेज रोल कौन से चैप्टर यार उस दिन ऑल्टरनेटिंग करंट्स पढ़ा था उसका एमसीक्यूज कर रहे हैं हम अभी आई थिंक पता नहीं अभी और कितने रहते हैं सेट्स ऑफ एमसीक्यूज लाइक कितना है यहाँ पे तो अलग ही है और यहाँ पे अलग ही चल रहा है तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है बट या ऑल्टरनेटिंग करंट की अभी एमसीक्यू कर रहा हूँ और इसके बाद चैप्टर को खोल कर पढ़ना शुरू करूंगी योर वॉइस इज वेरी लो क्योंकि मेरे को नींद आ रहा है आई डोंट नो यहाँ पर कैसे का सेटअप चल रहा है तो ओके ये यहाँ पे इंटरनेट अच्छा नहीं आ रहा है a bar of length 0.7 meters slides into the speed 1 meter per second magnetic field is 20 Tesla. Calculate the motional EMF. E is equal to minus BLV is into 8 into 8 7 a bar of length 0.15 b 5 मीटर b 40 since both parallel is the resistance of the load is 20 हो जाएगा 10 and the resistance of the bar is 5 ठीक है बहुत भारी भरकम का नहीं गा रहा है 15 आर इफेक्टिव 15 हो जाएगा एंड ई हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 0.5 इंटू 5 इंटू 40 10 10 30 तो 300 I is equal to 300 by 15 which is 20 yes no false बोलो क्या क्वेश्चन है power of length 2 meter magnitude 50 और power of length 2 meter ऐसे हैंग कर रहा है जिसमें B हमारे पास सही है what is the motion in the bar of solid so 40 meters
F.L.Y. What is B in this case? One set of 3D4. Why you chose AIATC exam? Because I have interest in aviation. This is a very long story, but for a short answer, I would say I have an interest in aviation, and that is why I chose this as a government exam to prepare. And why are you preparing for AIATC exam? Same pinch. But pilot is not the sole reason. I would definitely would have loved to become a pilot, but late realization and many other I was already into engineering when I realized this is not something I want to do, and aviation and sky is something which interests me. So by the engineering end, I got to know about ATC, and since then I'm preparing on this high five. Okay, can you tell me how is this thing 28 under root of 2 into 9.8 into 40? And Michael Gove is forced to leave when it comes to this. बट 28 भी कैसे कितना होता है 28 का स्क्वायर सी अप्रॉक्स इतना आ रहा है
Oh, 784 is 28 and 20. Okay, then that is fine. और कल से मैं कोशिश करूँगा जल्दी उठने का। अगर उठ गई तो मैं लाइव आ जाऊंगी। कल तो संडे ही है तो मैं किसी भी टाइम लाइव आ ही सकती हूँ एक्चुअली। मतलब आई ट्राई। अगर मैं 9 बजे भी उठ गई तो 10 बजे आ जाऊंगी। कोशिश करते हैं। कि एनर्जी पूछे तो पागल बता। आई होप ये इसका लास्ट हो। अरे यार ये कमी नहीं होने का आ रहा है। Irritating to the next level. Where is it? I'm trying to find it. Okay, anyhow. Voltage and energy current I think सबका स्क्वायर होता है आपका होता है। I see. Circular point मोस्टली मैं 8:30 के बाद उठती हूँ। तो क्योंकि मेरा ऑफिस 10 बजे का होता है तो मैं उठ के ऑफिस चली जाती हूँ। कल भी हम इतने बजे ही उठेंगे, 9 बजे तक के करीब उठेंगे। 10 बजे के अराउंड लाइव आएंगे। एंड ऑलमोस्ट तब तक लाइव होगी जब तक मेरी दोस्त नहीं आ जाती है। थोड़ा बहुत आई थिंक मुझे बीच में खाना देखना पड़ेगा बट चलो वो उसके आने पे बना लेंगे, वो भी चलेगा। बाकी जब वो चली जाएगी शाम को हम फिर से एक बार लाइव आएंगे। तो कल 10 बजे आएंगे। एंड अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा रहा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। बी ए क्यू ए
अभिषेक आई टोल्ड कि कल अराउंड 10 o'clock के अराउंड आऊंगी. I need to see this metallic answers and I see one. I have done reoptics and I have covered surface tension. I started revision with you guys early and I'm doing alternating current. Hmm. That is what I've done.
तुम्हारे कौन से चैप्टर्स हो गए? यार मैथ्स तो मेरे को करना है अभी स्टार्ट। आई वाज फोकसिंग ऑन एप्टीट्यूड क्योंकि वो भी मेरा वीकर थोड़ा बहुत वो भी रहता है यार अभी तो। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सॉरी परसेंटेज हो चुका है, प्रॉफिट लॉस एंड सीआई एंड एसआई रहता है, वो भी लगाऊं तो 2 दिन लगा के कर सकती हूँ। करते हैं यार, कल सुबह से जल्दी उठ के करते हैं हम। फोन बंद करती हूँ, मेरा मन कर रहा है इंस्टाग्राम बंद ही कर दूँ, चलाना है, डिस्ट्रैक्शन। तुम्हारा कितना हो गया? I'm so tired of this chapter. It's not ending. Only I don't know for what reason. Give the SI unit handle self-induction ML square T D. You have covered electrostatic and magnetism. कर दिया पूरा. And your optics भी. Nice. अभी के लिए मैं ये चैप्टर यहीं छोड़ रही हूँ, मेरे को नहीं आ रहा है समझ में क्या, मेरे को क्या करना है। अरे इंग्लिश के लिए तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं सच में बता रही हूँ, सो टायर्ड ऑफ डूइंग इंग्लिश, टू बी ऑनेस्ट। I am only very tired of doing English. Same here, same. सबसे गंदे चैप्टर्स पता क्या है, जिनका लिंक अप ही नहीं है कोई, वो है ड्यूअल नेचर, न्यूक्लियर फिजिक्स, और ऐसे चैप्टर्स भी हमें पढ़ना है, एटॉमिक फिजिक्स, इनका कोई लिंक अप ही नहीं। थैंक यू। इवन इफ यू नो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर, मुझे कुछ भी याद नहीं रहने वाला है, उसका केस ऐसा है। ओके, सो आई डिसाइडेड विल डू काइनेमेटिक्स एंड विल डू काइनेमेटिक्स अभी करते हैं। बहुत ज्यादा। So I thought of revising kinematics right now. तुम भी करोगे रिवीजन काइनेमेटिक्स का?
यार अभी मेरा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने का मन नहीं है, एंड मैं सत्य बोलूं, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना चाहते हो तो वो हम कल सुबह पढ़ेंगे। मैं सत्य बोलूं, अभी मुझे कुछ पढ़ने का मन नहीं है। तो अभी हम क्या करें, क्या करें, क्या करें? वी कैन डू वन थिंग, तुम अभी हो ही तो हम मिलकर थोड़ा प्लानिंग कर लेते हैं कि अपकमिंग डेज में हम लोग क्या क्या प्लान करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बताओ कहाँ से स्टार्ट करें। ओके, पहले बताओ कल हम क्या रिवाइज करें। यहाँ पे मैं फिजिक्स का लिख रही हूँ। कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करें सुबह। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर ही रहे हैं तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे साथ में। फिर हम लोग करेंगे मैग्नेटिज्म। ईएमआई एंड ऑल्टरनेटिंग करंट हम एक बार ही साथ में करें। ये बताओ मेरे को, ये ठीक है? कल इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तो वो 14 जून हो जाएगा। ये 15 एंड ये 16 जून। क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने को रहेंगे, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 17 जून डाल दूँ। ये संडे है, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है। ओके, एंड विल ट्राई टू कम इन मॉर्निंग, दैट वुड बी बेटर। ओके, तो अभी 12th में ऑलरेडी हम लोग रे ऑप्टिक्स कर चुके हैं ना? रे ऑप्टिक्स कर लिया है हमने। एक सेमीकंडक्टर्स भी रहता है हमारा चैप्टर, तो हम सेमीकंडक्टर्स भी कर लें। वो हो जाएगा 18 जून, थर्सडे का। सो ऐसे हमारा हो जाएगा। इसका क्या कहते हैं, तो यार क्लू दो पहले तो। तुम मेरे को बताओ, तुम्हारे को ये टाइम टेबल ठीक है? हाँ, बताओ। तीनों में अलग अलग कुछ बात है। हाँ बट करना तो है ना, आई नो। इजी है बट करना है। ठीक है। ओके, so this week is covered, this week will be covered in this. मैं देखती हूँ कि 12th का कोई चैप्टर ना रह जाए। वेव ऑप्टिक्स रहता है, वो इजी है, वो बाद में करेंगे। मेजर चैप्टर देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम थोड़ा बिजी भी रहेंगे, तो हम मॉर्निंग क्लास ही आएंगे अगर नेक्स्ट वीक से रहते। ओके, आई थिंक दिस कवर अप मेजर पार्ट ऑफ 12th फिजिक्स। तो अब मुझे तुम बताओ कि नेक्स्ट सैटरडे संडे हम थर्मोडायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स ऐसी चीजें करें। भाई मेरे को जॉब करना है, मेरे पास आके मुश्किल से 2 घंटे होते हैं। मैथ्स नहीं कर पाएंगे पैरेलल।
पहले हम ये जो 2 हफ्ते रहते हैं जून के, इसमें हम फिजिक्स अच्छे से रिवाइज करते हैं, ठीक है। 7th जो है 19 जून, उसको हो जाएगा फ्राइडे। थर्मोडाइनमिक्स, काइनेमेटिक्स ऐसी चीजें करते हैं, तो मैं काइनेमेटिक्स लिख रही हूँ। 19 जून फ्राइडे। एंड सैटरडे संडे देगा तो काइनेमेटिक्स भी होगा इसमें, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी एंड पावर, ये सब कवर अप होगा सैटरडे एंड संडे, दैट इज 20 and 21, 21st June। ये एक हफ्ते का प्लान है, अगले संडे तक का। ये बड़े बड़े चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, इसके बाद हमारे पास केवल छोटे चैप्टर रह जाएंगे। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मैं रिवील कर सकती, ओके। सो स्मॉल वेटेज चैप्टर ले लो, फिजिक्स। इसमें हमारा आ जाएगा न्यूक्लियर फिजिक्स, ड्यूअल नेचर, और अभी इसमें थर्मोडायनेमिक्स भी तो रहता है, एटम न्यूक्लियर। फोर्थ इज न्यूक्लियर फिजिक्स, ड्यूअल नेचर, एटम न्यूक्लियर एंड बस करो भाई, बस करो, मैं और नहीं पेस्ट कर, सभी बोलो। थर्मोडायनेमिक्स तो मेन में आ जाता, वेव ऑप्टिक्स। एंड और कौन सा रह गया, थर्मोडायनेमिक्स रह गया, वो नहीं भूलना। ये सब रहता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। सो ये सब कर लेंगे नेक्स्ट कमिंग वीक में, ओके। इसके बाद आई थिंक ये जून एंड तक हो जाएगा, जुलाई में हम लोग मैथ्स स्टार्ट करेंगे, एंड दैट्स इट। सुबह 1 घंटा एक्स्ट्रा आने की कोशिश करेंगे, उस टाइम पे वर्बल रीजनिंग करेंगे, एंड 1 घंटा वर्बल रीजनिंग, एंड उसके बाद अपना फिजिक्स अभी 2 हफ्तों के लिए कंटिन्यू करेंगे, दैट इज बाय द एंड ऑफ जून हम लोग फिजिक्स अपना ओवरऑल कंप्लीट कर लेंगे। एंड एक संडे या सैटरडे बैठकर, यार वैकेंसी लगा लो, आ सकता है यार 2-3 महीनों के अंदर अंदर कभी भी अब आ सकता है, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट मंथ पूरा हम मैथ्स को डेडिकेट करेंगे, स्टार्टिंग विद 3D ज्योमेट्री, एंड जोन जोन से भी पहले मेजर चैप्टर है वो कवर अप करेंगे, उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स पे आ जाएंगे, ठीक है। सो बाय दिस टाइम वर्बल रीजनिंग, एप्टीट्यूड 1-1 घंटा निकालेंगे सुबह और ये सब करेंगे। लेट अस प्लान कि अगस्त से हम लोग वोकैबुलरी पार्ट छोड़कर तुम लोग बाकी का जो ग्रामर का पोर्शन है वो सब चीजें की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बाकी सब हम कर लेंगे। अभी किसी भी चीज का यार डर मत रखो यार, अपना तैयारी करो, अपने प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, अपने आप से कंपेयर करो, क्या कट ऑफ आएगा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे को होना चाहिए कि तुम्हारा कितना स्टैंडर्ड है कट ऑफ का। लास्ट टाइम 108 तक गया था, तो तुम एक स्टैंडर्ड बना लो कि भाई मेरे को 115 तक कट ऑफ लाना है, तो तुम अपना प्रीवियस ईयर दो, उसमें क्वेश्चन करो कि 115 के अप्रोक्सीमेटली आओ। तुम अगर यहाँ पे अपने सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर में 120 लाओगे ना, ठीक है ना, 115 से 120 के बीच में, तो तुम्हारा वहां पे 110 तक आएगा, ठीक है। तो यही सब करते हैं, कल मेजर पार्ट हम कर लेंगे ये हफ्ता फिजिक्स का, एंड लेट अस डू इट। उठते हैं सुबह, ओके। तो मैं कल सुबह आऊंगी 10 बजे। टिल देन बाय बाय, सी यू गाइस टुमारो।